Now I'll take exercise 4.2. In this, basically they'll give you the difference of the two sides. Last time it was addition of these two sides. Now they'll give you difference of the two sides. इसमें थोड़ा फर्क होता है, so ध्यान रखना है. Exercise 4.2. See the first sum. What was given the first sum? First sum they are given construct triangle XYZ. So it is construct triangle XYZ such that YZ is equal to 7.4, angle XYZ is equal to 45 degrees, and XY minus XZ is equal to 2.7. ठीक है. Normally the addition was given, now it is subtraction. ये दो जो sides है, रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. In exercise 4.1 what happened was this angle Y is over here, YZ is given to us 7.4, and this is X. XY minus XZ is given. So in this case we simply have to, last time it was addition of this two sides, XY and XZ को ऐड करके दिया था, अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन है. तो इतना याद रखने का, XY और XZ में कौन बड़ा है, माइनस है. तो अगर XY माइनस XZ इज 2.7, दैट मीन्स XY इज बिगर, मतलब दिस साइड इज लॉन्गर देन दिस साइड. सो वी कैन राइट XY माइनस XZ इज 2.7. इट मीन्स दैट XY इज बिगर देन XZ. याद रखना है, ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो नाउ व्हाट वी डू इज, initial part remains the same. What is that? Take a base. अपर ये जो बेस वाला दिया है और उधर का जो साइड अगर बड़ा होगा ना तो थोड़ा नीचे लेना अपना डायग्राम, ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगा. बराबर. तो सपोज आई टेक लाइक दिस. हाउ मच इज द बेस? 7.4. करेक्ट. देन व्हाट आई डू इज आई टेक अ प्रोट्रैक्टर. ये 7.4 का बेस दिए, दैट्स वाई जेड. नाउ आई नो दैट दिस साइड, ये और ये दो साइड आने वाले, इसमें ये साइड बड़ा है. तो रूल इज दैट आपको एंगल पहले कंस्ट्रक्ट करना है और फिर वो जो डिफरेंस है 2.7 का वो ऊपर आप कट करना है. वो मैं समझाता हूँ. सो व्हाट आई डू इज, so what will happen, this will be 45, right? This will be 45. थोड़ा एक्सटेंड करना है बिकॉज द रूल इज डिफरेंट. नाउ गोइंग फर्दर, जितना आगा ना 2.7 उतने का आग कट करने का है. यू टू कट एन आर्क ऑफ 2.7. सो 2.7 का आर्क मट कट कर रहा हूँ इधर से. एंड द रूल इज दैट ये जो आर्क कट किया ना, ये जो पॉइंट है तुम्हारा एक्स नहीं है बट कोई अलग पॉइंट, आई टेक इट एज से A, and that point will be joined with this, so that will be called as AZ. Okay, now the rule is that we need to bisect AZ, matlab something of this kind will happen like this. Okay, so you may ask, how do you do? So we take more than half and we cut arc. Okay, so here okay, and what do? I will join this. So this becomes your perpendicular bisect, and wherever it cuts, that actually is your x. How that will give the technical कैसा आता है, थियोरेटिकल कैसा आता है, देखते हैं. हम ज्वाइन किया. अब याद रखना, ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको मैं नाम दे देता हूँ एल. इधर लिखूँगा लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ sec AZ. So we know that any point which lies on the perpendicular bisector is at same distance from the end points. मतलब XA and XZ are equal. So I can say therefore
एक्स ए इज इक्वल टू एक्स जेड, इसको नंबर किया 1 और रीज़न आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम. Now first of all this angle is 45 degrees, this is 7.4, this is 2.7. अभी ये एक्स वाई एक्स जेड से 2.7 लंबा है, वो कैसे बताएंगे? तो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू सी दिस एक्स ए, सी द डायग्राम, एक्स ए प्लस ए वाई is equal to big segment called xy. The reason is x dash a dash y. Now xa is a segment which is equal to xz. xa is equal to xz because perpendicular bisector theorem. So xa की जगह I put xz and ay remains the ay is 2.7. No? This is 2.7 is equal to xy and you can write from 1 and then xz इधर जाएगा. So 2.7 is equal to xy minus xz, that is xy minus xz is 2.7. So that's how we get this is xy is longer than xz by this much and this much is 2.7. And then you can simply write triangle xyz is the required triangle. Okay, thank you. Now we'll do the next side. Now continuing further, construct triangle PQR such that QR is equal to 6.5, angle PQR is equal to 60 degrees and they will give you difference of this side and this side, मतलब PQ and PR, मतलब PQ minus PR is given to be 2.5. Now one thing is clear, PQ minus PR दिया मतलब PQ पहले है तो PQ is longer than PR, then the subtraction is positive, right? बड़ा नंबर पहले आएगा, बाद में छोटा. So your rough diagram would be like same like last time, only instead of XYZ it is PQR, same type. So this is PQR, this is 60 degrees, this is 6.5. 4.1 में ये दोनों का सम देते थे, अभी इस दोनों का डिफरेंस दे रहे हैं, लेकिन डिफरेंस में एक होता है कि बड़ा सेगमेंट पहले आएगा. सो PQ माइनस PR है मतलब PQ बड़ा हो जाता है, राइट? सो यू विल राइट PQ माइनस PR इज 2.5, therefore PQ is longer than PR. एक है, ठीक है. Now what do I do? I first start with QR. QR is 6.5, correct? So अभी भी देखो PQ बड़ा है ना, तो जितना नीचे होगा उतना करो, that will be better, क्योंकि कभी कभी है ना डायग्राम बहुत ऊपर जाता है. So 6.5. So I take from 1 लिया. If I take from 1, then I should go up to 7.5. बराबर? So this is 7.5. So I'll be now joining this, right? Now protractor लेके अपने को एंगल कितने का 60 degrees. Angle is 60. How much is the angle? 60. बराबर है. So angle कितने का है? 60 degrees. So I'll be taking from here $60. And then I'll extend it a bit more. Correct? This is 60 degrees. Normally they give the sum and then we cut that out, but अभी the difference दिया है. अगर ये वाला साइड इससे बड़ा है तो 2.5. So 2.5 will cut an arc of 2.5. And then this point will be joined with this. And mind you, this is not going to be your P. This is not going to be your P. This is your Q. This is your R. So I take some other alphabet called A. Now the next rule is the segment which is got has to be bisected. मतलब ऐसा ऊपर जाए. So that's why I should tell that you should extend it. Alright. So I'll take more than half.
take more than half. Correct. Now this point and this point, what I'm going to do is I'm going to join them and extend it. Now see, this is going to go very up, एकदम ऊपर जाएगा. सो इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा. So this point which you get over here, this will be your P, and this will be then joined with this. समझा? Now these two segments are equal. ये तुम्हारा line L है. Actually the dimension is very odd, that's why ऐसा हो रहा है. ये तुम्हारा perpendicular bisector, मतलब ये दो equal हो गए और ये लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, इसके लिए ये दोनों इक्वल है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. So we can write line L is the perpendicular bisector of sec AR. So that's why P इधर का जो है ना P A is equal to PR. I'll number this as 1 perpendicular bisector theorem. Correct. And then now this is 2.5. Right. So now what I'm going to do is PQ. So it is PA plus AQ is equal to PQ, P dash A dash Q. PA is a segment. This PA, जो PA segment है ना, ये PA, ये पूरा PA is equal to PR. इधर भी लिखा देखो, PA is equal to PR. तो इधर डालो PR और AQ का वैल्यू 2.5 है. So it is from 1. Then PQ minus PR is 2.5. So that's how we can, ये QR लिख सकते हैं हमें कितने 6.5. थोड़ा ये डायमेंशन ऐसा है ना कि ट्राइंगल आपका बाहर जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना. इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ओके, आपको चाहिए तो आप ये 60 डिग्रीज को थोड़ा कम कर देना, 40 डिग्रीज कर दो एंड देन यू डू इट, सो इट गो ईजी. या तो फिर और नीचे ले लेना पेज में. ओके, थैंक यू.